Now we are going to start now for the methods, my dear, job evaluations method. So in this method, I have talked about the two things. One is a qualitative and second is a quantitative. So in the quantitative, actually, the major two methods are point systems methods and the factor comparison method. In a qualitative, as I said, ranking methods and grading method. Let's begin. The first one is a qualitative method that is known as ranking methods. ओके, रैंकिंग मेथड को थोड़ा समझते हैं मेरे दोस्त. ऑल जॉब्स आर इवैल्यूएटेड एंड रैंक्ड इन द ऑर्डर बेस. ओके, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हमने कर दिया रैंकिंग. किसके आधार पे? ओके, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द जॉब एंड हाउ टफ इट इज. कैन दिस जॉब इवैल्यूएशन कैन बी डन बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप. सो अ कमिटी ऑफ अ सेवरल एग्जीक्यूटिव इज कंस्टिट्यूटेड which analyze the data collected from job analysis. जो आपके JD से आ गया, जॉब स्पेसिफिकेशन से आ गया, जॉब डिस्क्रिप्शन से आ गया, उसके आधार पे योर कमिटी क्या करता है? वो कमिटी आपके एनालाइज करेगा सारे जॉब को. हो, इसमें इतने सारा काम है. ओके, इस काम को करने के लिए व्हाट काइंड्स ऑफ मेंटल एफर्ट्स रिक्वायर्ड. कितना काम, कितना दिमागी का काम है भैया. ओके, कितना रिस्क, कितना इसके साथ जुड़ा हुआ है. इस काम को करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए. ओहो, ओके, काम बहुत ज्यादा है, मेंटल एफर्ट ज्यादा. लेट्स बिगिन. सो बेस्ड ऑन दैट एक्चुअली वी डिफाइन द रैंकिंग मैटर. Now there is a certain steps involved in the process, and the steps are, first, we start the data collection from the job analysis. मेरे दोस्त, रैंकिंग मेथड का पहला क्या स्टेप्स है? स्टेप्स कैसे करेंगे इसको? यस, स्टेप्स हमारा ये डेटा कलेक्शन फ्रॉम द जॉब. सबसे पहले डेटा कलेक्शन कर लिया जॉब एनालिसिस का. क्या करेगा, क्या ना करेगा, हमने कर लिया. उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द रेटर्स और रेटरर्स कमिटी. उस कमिटी का काम क्या है? अब वो रैंकिंग ऑफ द जॉब करना चालू कर देगा बेस्ड ऑन द टू एट्रीब्यूट्स एज आई सेड. पहला इंपॉर्टेंस ऑफ द जॉब, सेकंड इज हाउ टफ इट इज. So ranking of the job हो गया. उसको decide the pay structure. इसके आधार पे of course we define, this job having such a huge and higher on the importance in the company. Absolutely, we have to have the pay structure on the on off of this one, higher one. Merits and demerits हर चीज के होते हैं मेरे दोस्त. अब समझना हम पे है, हमें लेना है, हमें असेस करना है, हमें फाइनल करना है चुनाव का कि हमें रैंकिंग मेथड यूज करना है या नहीं करना है. करना है तो कब करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है. So in the merits, it's a very easiest process. सिंपल था ना, बहुत आसान था. This method is very economical. तो सबसे बड़ी डिमेरिट इस प्रोसेस का क्या है? सबसे ज्यादा ये सब्जेक्टिव है, सबसे ज्यादा हाईली चांसेस ऑफ द ह्यूमन एरर है. देना था कुछ और, हो गया कुछ और. के पहला समझ में आ गया, वेरी इजीएस्ट है. अगला समझते हैं जॉब ग्रेडिंग सिस्टम. दैट इज ऑल्सो क्वालिटेटिव माय डियर. ये भी क्वालिटेटिव है. अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस जॉब एनालिसिस, information about different job is collected and they are put under different grades. and खासतौर पे ऑर्गेनाइजेशन, आप खासतौर पे गवर्नमेंट जॉब में सुने होंगे, ग्रेड 1 का है, ग्रेड 2 का है, ग्रेड 3 का है, ग्रेड 4 का है. सबसे ज्यादा ये जो ग्रेड जॉब ग्रेडिंग सिस्टम, जो सिस्टम जॉब इवैल्यूएशन है, वो खासतौर पे हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे यही सिस्टम ज्यादा से ज्यादा यूज होता है मेरे दोस्त. ओके, वहां पे क्या कौन कौन सा 4 एट्रीब्यूट्स पे, 4 फैक्टर्स पे काम करता है. पहला नेचर ऑफ द जॉब, सेकंड इज इंपॉर्टेंस ऑफ द जॉब, थर्ड वन इज रेस्पॉन्सिबिलिटीज. बंदे का काम कितना बड़ा होगा, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा. सो दीज आर द मेजर एट्रीब्यूट्स. बेस्ड ऑन दैट वी डिफाइन द जॉब ग्रेडिंग माय डियर. Job grading, my dear, and especially in the most of the organization actually we do. And वो ग्रेड क्या क्या हो सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं. आप या मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं मेरे दोस्त, हर बार ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, उस कमिटी के ऊपर निर्भर करता है कि उस कमिटी ने कौन कौन सा मुख्य रूप से ग्रेडिंग्स बनाया है उस ग्रेड को इवैल्यूएट करने के लिए. इट कैन बी स्किल्ड, it can be unskilled, it can be clerical, it can be administrative. इतने सारे बकेट बना दिया. ओके, इस स्किल्ड वाला ग्रेड होगा, ये अनस्किल्ड वाला ग्रेड होगा, एक क्लरिकल जॉब होगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होगा, ये मैनेजमेंट का जॉब होगा. लाइक दैट, इस प्रकार की क्लासिफिकेशन they do design, and based on that they just grading. Okay, this skilled is graded, okay, 2, this skill is unskilled, graded, okay, this one, clerical this one, okay, administrative this one, and based on that सारे बकेट को, okay, ये ग्रेड 2 का है, दैट मींस एब्सोल्युटली वो सारा जितने भी कॉम्पेंसेशन होगा ग्रेड से मैच करा दिया है. ओके एंड ओके. सो दिस सिस्टम्स मेनली एक्चुअली यूज्ड इन द गवर्नमेंट. सो फॉर ईच ग्रेड और क्लास देयर इज अ डिफरेंट रेट्स ऑफ द वेजेस माय डियर. सो हाउ एक्चुअली इट्स वर्क, काम कैसे करता है? एब्सोल्युटली वहां पे हम क्या करेंगे, प्रिपेयरिंग ग्रेड डिस्क्रिप्शन. हम यदि स्किल्ड का ग्रेड बनाए हैं तो स्किल्ड में क्या क्या होगा. सेकेंड इज सिलेक्शन ऑफ द ग्रेड्स. ओके, पहले तो हम डिस्क्रिप्शन कर दिया,
किस स्किल्ड वाला में ले रहे हैं, ओके, इस डिस्क्रिप्शन रहेगा जी। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द ग्रेड्स, उसके बाद ग्रेडिंग ऑफ द जॉब। अब हमने क्या कर दिया, ग्रेड्स आइडेंटिफाई कर दिया, उसमें प्लॉटिंग कर दो जी जॉब को, ये वाला इसमें जाएगा, ये ग्रेड भी इसमें जाएगा, ये इसमें क्लर्कियल में जाएगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा, ये मैनेजरियल में जाएगा, लाइक दैट। उसके बाद यू डिफाइन द पे स्ट्रक्चर, putting job in the relevant grades. This is nothing very very easiest as well. That is also qualitative. So merits and demerits इसके भी है मेरे दोस्त। इसके merits क्या है? Absolutely, the system is as compared to the ranking method, I could say yes better than, but yes it is a systematic criterion है यहाँ पे कि हमने पूरा थोड़ा सा 2 लेवल और अलग से किया है, ग्रेडिंग किया है, वेरियस जॉब का किया है। इट इज easy to write to make others understand, very easy है दूसरों को समझाना। देखो जी ये काम था, इसमें ये काम को मैंने इस परिप्रेक्ष्य में किया है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी टेक्निकल बैकग्राउंड टू मेक देम अंडरस्टैंड। कोई बंदा कोई आसानी से वो समझ सकता है इस चीज को, कितना मेंटल एफर्ट रिक्वायर्ड है। इट इज इजी टू डिटरमाइन एंड इंप्लीमेंट पे स्केल, माय डियर, फॉर वेरियस ग्रेडेड ऑफ द क्लासेस, and this method is absolutely successfully used in the government department. Government department सबसे ज्यादा इस मेथड को यूज करता है। Now what's a demerit? इसके demerit क्या है? High chances of the human biasness. There is a possibility of the wrong classification of the job. हो सकता है हमने क्लासिफाई, ओके, हो सकता है कि वो जाना चाहिए था क्लर्कियल में, हमने डाल दिया किसको, एडमिनिस्ट्रेटिव में। वो हो सकता है कि वो दैट पोजीशन में फॉल इन द स्किल, बट अनफॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स आई एम जस्ट पुटिंग इन द सेम स्किल। थर्ड पॉइंट इज दैट क्वांटिटेटिव अप्रोच का पहला मेथड है जॉब इवैल्यूएशन में, और वो है पॉइंट सिस्टम मेथड। पहला पॉइंट सिस्टम मेथड। और आपको मैं बताते हुए बड़ा मुझे खुशी मिल रहा है क्या, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, most of the small and large organization, okay, they widely use this point system method. क्यों? इसकी भी ब्यूटी है बहुत सारे, वो भी मैं आपसे जिक्र करने वाला हूं। इट इन्वॉल्व्स क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल अप्रोच टू मेजर द जॉब वैल्यू। अक्सर उसमें दो क्या था, क्वालिटेटिव था, यहां पे क्या आ गया, एनालिटिकल स्किल भी यूज हो रहा है और क्वांटिटी भी है, तो लाजमी है कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। A number of important factors can be considered in the each job are identified. सारे के लिए कौन कौन से factors हैं, important factors, and the degree of each factor is also determined for assigning points. So the point of the different jobs are later on converted into pay rates. आगे चल के ही रेट्स मेरा कन्वर्ट हो जाता है कि इस पॉइंट पे इतना पॉइंट आएगा तो भैया उसका रेट इतना होगा। सिंपल पे स्ट्रक्चर डिफाइन हमारे पास हो गया है। आगे बढ़ते हैं, कैसे थोड़ा समझते हैं। सो हाउ इट वर्क, the first step is list down all the jobs, then second one is number of factors, कौन कौन से factors हैं उस job को जो that will signify, okay, the importance, the gravity of doing the job. Third one is determine the degree, okay, which are the major, which are the degree, right, which may signify that importance of the factors, कौन से factors का कितना degree of importance होगा। And the fourth one is allocation of points to degree, उसके बाद उस प्रत्येक डिग्री के अगेंस्ट में हम पॉइंट डिफाइन कर देते हैं, ए पॉइंट, बिकॉज आई नो दिस डिग्री ऑफ दिस फैक्टर इज हायर, एब्सोल्युटली द पॉइंट विल बी आल्सो हायर एज कंपेयर्ड टू अदर्स। So design and further, okay, what actually we do, absolutely one of an objective, right, that is define the pay structure, again that position, and simple, okay. So the major 5 steps actually we do follow in the point system method. The first one is a list down all the jobs, second is number of the factor, third one is determine the degree, fourth one is allocating of the point and degree, and last but not least that is defining based on this data actually we define the pay structure, my dear। आगे बढ़ते हैं, कैसे होता है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं देता हूं। आपके पास एक स्लाइड दिख रहा होगा, सिंपल था। आप देखिएगा यहाँ पे कई सारे सेट ऑफ यहाँ पे जॉब लिखे हुए, टास्क लिखे हुए। एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें क्या सारे पॉइंट, यहाँ पे देखिए पॉइंट डिफाइंड है। कोई व्यक्ति यदि कोई बुक लिखता है, पब्लिश करता है, उसको 6 क्रेडिट पॉइंट्स पर बुक मिलेंगे मेरे दोस्त, ओके, 6। That means suppose we have defined based on the degree of the factors, okay, these are the points based on that we defined। यहाँ पे एक चीज और हम डिफाइन करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पॉइंट वी डू ऑल्सो डिफाइन हियर माय डियर। आप चाहे 1 या 2 या 3 या 4 डॉट, आपके पास मैक्सिमम जो पॉइंट मिलेंगे वो 4 ही मिलेंगे। क्यों? बिकॉज इन सम एक्टिविटीज एज अ सेड, राइट, द डिग्री ऑफ, आपको याद होगा यहाँ पे मैं यहाँ पे बोला था क्या, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द फैक्टर्स, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द फैक्टर्स, एंड दिस इज नथिंग बेसिकली डिफाइनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द फैक्टर्स माय डियर। सो इन दैट केस वी हैव टू आल्सो define the maximum value of the points as well,
and that will make the people clarity, okay, based on. And how we will define? Absolutely defining. And how will you define the maximum value, maximum points? Absolutely the role of here define determining the degree that having such a lead contributor, okay, while designing or defining the points, my dear. इसके भी merits and demerits हैं, क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. So the merits of the points method is gives the numerical basis for paid differentials. सबसे पहले न्यूमेरिकल मेरे पास वैल्यू आ गया, तो ये सबसे बड़ी अच्छी मेरिट था. अभी तक क्या था, एजम्पशन पे चल रहा था, कौन से क्वालिटेटिव में. यहाँ तो एक फायदा मुझे दिख रहा है जी सामने और क्या दिख रहा है जी, द स्केल once decided can be used for fairly a long period. ओके यहां पे याद रखिएगा, जब आपने स्केल जो डिफाइन किया है ना, जो कैलिब्रेशन जो आपका रेटिंग का पॉइंट का फैक्टर्स का, याद रखिएगा बार बार चेंज करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा. आप एक बार जब आप फैक्टर्स बना रहे हैं, स्केल बना रहे हैं, उस स्केल को प्लीज आप कोशिश करिएगा सस्टेन करने का. System and this system is more systematic, so that's why it is quite acceptable. Demerits क्या है? Absolutely time consuming ज्यादा है, cost भी ज्यादा होगा. The task of defining job factors, absolutely, it's a time consuming, as I said. Selection of the factors and then sub factors is also difficult, right? To, defining in order to propositions, my dear. The allocating of the marks to the various factors and the sub factors is also difficult job, my dear. Last one जो job evaluation methods है, जो quantitative है, वो है factor comparison methods. फैक्टर कंपैरिजन मेथड्स की मैं बात करूं तो दिस मेथड इज कॉम्बिनेशन ऑफ रैंकिंग एंड पॉइंट सिस्टम. ये मेथड क्या है? दिस मेथड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैंकिंग एंड पॉइंट सिस्टम. एंड यहाँ पे मुख्य रूप से चार चीजों का बहुत बड़ा रोल है मेरे दोस्त. फोर एट्रीब्यूट. द फर्स्ट वन इज मेंटल एफर्ट, सेकंड इज स्किल लेवल रिक्वायर्ड, थर्ड वन इज फिजिकल एफर्ट, फोर्थ वन इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज वर्किंग कंडीशन. Okay, what kinds of the mental efforts actually required to perform this job? What kinds of set of skills actually required to do this job? What kinds of physical efforts required to perform this job? Apart from that, what could be the roles and responsibilities, right, for this positions, my dear? And apart from that, what could be the working condition? Working conditions signifying, of course, that could be that's related to the nature of the job. That's also related to the geographical, कहाँ पे है, कैसा है, किस location में होगा, क्या वो mining industry का होगा, like that. So these all the factors are the lead contributor in order to defining the job evaluations, my dear. Yeah, analyzing the job evaluations. Okay, so this method is a relative rank of the various jobs is evaluating the rational of monetary scale. Let's begin. कैसे चारों ये जो attributes, sorry 5 attributes वो कैसे play करता है. So factor comparison methods, how it's work. ये काम कैसे करता है? ये काम सबसे पहला इसका क्या है? Selecting factors to be used. कौन कौन सा फैक्टर्स होगा उसको सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे. उसके बाद सिलेक्शन ऑफ जॉब्स, कौन कौन से जॉब्स इसमें आने वाले हैं मेरे दोस्त. उसको रैंकिंग ऑफ ईच जॉब्स, जॉब को मैंने रैंकिंग कर दिया, जॉब को याद होगा रैंकिंग मेथड में. उसके बाद वैल्यूइंग द फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स का क्या इंपॉर्टेंस होगा, क्या कितना वैल्यू होगा. एट द लास्ट बट नॉट लिस्ट establishing the ways of the pay structure, my dear. So these are the 5 steps through which actually we may apply the factor comparison job evaluation method. And the merits and demerits of this factor comparison methods are, the first one, as I said, merits are, okay, it is a systematic, the process actually very systematic, because already we quantified it, so systematic hoga hi hoga. The relative value of each job is determined by comparison with some key jobs. Okay, इसके साथ दो के साथ वो कंपेयर किया जाता है. Okay, इसमें क्या ये सेट वैल्यूज है, फॉल करेंगे क्या. ये जो मार्केटिंग असिस्टेंट्स का जॉब है, that value may carry the same value as compared to the value of the receptionist, or the value of the marketing managers that may carry the same value as compared to the finance manager. डिपेंड्स माय डियर. सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 several and set of jobs के अगेंस्ट में. ओके, this jobs carry this value, absolutely the same value may also get carry by the other jobs as well. Now demerits में क्या है मेरे दोस्त, demerits का इसका क्या है, difficult to operate as selection of unfairly paid job as key jobs can result in considerable error. Okay,
सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है एंड कैन नॉट बी इजिली अंडरस्टूड. सारे लोग जल्दी से समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वी डू ऑलवेज अप्लाई पेयर्ड कंपैरिजन मेथड्स.